Hey all, this is Anjali and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to solve the Java portion of question paper year 2015. So this is 2015's question paper and जैसे आपको पता है कि question number 2 and question number 4 belongs to Java and the total weightage is 25 marks in your board exam. So to start with, you have question number 2, A part, जहाँ पे question है write the value of t after the execution of the following code. We have two variables, int t, int s. S is initially 6 and then t is equal to 8 into s plus plus mod 7. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली, यहाँ पे प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट में यूज हो रहा है. Second, it's not divide, it's mod, that is remainder operator. So when you read your first statement, it is 8 into s plus plus. S is initially 6. एंड ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले s की वैल्यू 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद आपका s इंक्रीज होगा. सो मुझे जो यूज करनी है s की वैल्यू यहाँ पे वो 6 ही यूज करनी है. तो 8 इंटू 6 इज 48. 48 आ गया. फिर हम करेंगे 48 mod 7. 48 mod 7. 48 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 42 एंड जो रिमाइंडर बचता है आपके पास वो बचता है 6 बिकॉज 7 into 7 is 49. Yeah, so we get the remainder as 6 in this case. So इसमें जो फाइनली वैल्यू आएगी t की वो 6 आएगी. So आपसे यही पूछा है what is the value of t after the execution of the code. So that's C. So answer 2 का जो A पार्ट है उसमें value of t is equal to 6. And why is it so? Because 8 multiplied by 6 mod 7. So that is 48 mod 7, which is 6. Okay, so that's why value of t is 6. Value of s is not asked in this question, but अगर पूछी होती तो उसकी वैल्यू हो जाती 7, क्योंकि जब वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगा उसके बाद s की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी. s 6 था तो s इंक्रीज होकर 7 बन जाएगा बिकॉज इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट. B part is which tag is used to display a horizontal rule in a web page. So we have the tag HR which is used to show the horizontal rule. Capital small कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि HTML case insensitive होती है. Okay, now HR means horizontal rule, but इतना सा लिखेंगे 1 mark के लिए doesn't seem good. So which tag is used to display horizontal rule? We can say HR tag is used, and then you can give an example. Example HR color is equal to blue, width is equal to 5. So this will draw a blue color of thickness 5 points. So we can give an example like this. Okay, then let's see in a switch statement what is the purpose of break statement. Now break statement is given at the last statement of every case. Q, because we want when switch variable is matched with the case value or which is भी matching case में जाता है, after executing that matching case switch should be over. Switch वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए. Control should come out of the switch. So अगर आप break नहीं लिखोगे तो switch खत्म नहीं होता है, वो अपने से नीचे वाले केस को भी execute कर देता है. जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए. आई वांट कि जैसे ही स्विच का कोई भी केस एग्जीक्यूट हो उसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो स्विच से बाहर आ जाना चाहिए. सो ब्रेक का क्या पर्पस है? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड एज लास्ट स्टेटमेंट ऑफ every case in switch so that after executing the statements of the matching case, control should come out of the switch. So that's the basic thing. Break statement is used as last statement of every case in switch so that after executing the statements of that matching case, control should come out of the switch. So that's the purpose. Why do we use break? And if we don't put break, it becomes fall through situation. Fall through means it will keep executing the statements of the following cases till the time it gets a break statement or the switch gets over.
Then identify the error in the following HTML code, rewrite the code. Error in this code, this is UL tag मतलब unordered list, type A start 4. Now unordered list में type A नहीं हो सकता, A1 रोमन लेटर्स ये सब टाइप होते हैं ऑर्डर लिस्ट के साथ. अनऑर्डर लिस्ट मतलब बुलेटेड लिस्ट. यू कांट हैव अल्फाबेट्स और डिजिट्स एज द नेम्स. सो इसकी सबसे पहली एरर यही है. सो आइडेंटिफाई द एरर. एरर इज UL stands for unordered list which cannot have type as A and can't start from a number. So it doesn't have a start क्योंकि सारे bullets हैं तो कोई first या second element होता ही नहीं है. So we don't have a start with the UL tag. So can't start from a number. So correction we have to write. If we correct it, there are two options for this. Either I make the tag as OL and write the same thing after that. Type is equal to A and start is equal to 4. So either we can do this or we can write UL type is equal to square, any type you give, and we don't give the start because there is no start with the unordered list. So you can write any of the two solutions. Better solution is OL जिसमें आपको सिर्फ UL को change करके OL करना पड़ेगा because the question is for 1 mark, so that would be enough. Then E part is write Java code to assign the value 70 to a variable y, then decrease the value of y by 5 and store it in variable z. That's very easy question for 2 marks. Very easy question. लेकिन सब confuse हो जाते हैं इस question को पढ़ के कि पता नहीं क्या करना है इसमें. इतना easy तो हो नहीं सकता, but हो सकता है. So read your question properly and solve it what it means. So it is possible कि इतना easy question भी 2 marks के लिए आ जाए. सो करना क्या है इसमें आपको, उसने बोला है राइट जावा कोड टू असाइन द वैल्यू 70 टू वेरिएबल y. तो आपको 70 को असाइन करना है y में. ये कहीं नहीं बोला कि y को डिक्लेयर करना है, तो आई एम नॉट डिक्लेयरिंग. मुझे सिर्फ क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 70. दैट्स इट. दैट मीन्स 70 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, y में. देन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ y बाय 5 एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल z. सो मुझे करना है z इज इक्वल टू y माइनस 5. That's it. So that is it. And this answer is for 2 marks. Yes, it's unbelievable, but it's true. So इतना easy question भी आ सकता है आपको, but be careful while reading and understanding the question. Next here, write the output that will be generated by the code given below. Int I, int t. Okay, so we start from here. Output निकालना है आपको. So working करेंगे पहले हम इसकी. Working के लिए, as I've told you earlier, working के लिए let's start with the initial steps. कि i जो है इनिशियली वो आपके पास 5 है. फिर कंडीशन चेक होगी i लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज 5 लेस देन इक्वल टू 10. यस, वो कंडीशन ट्रू है. ट्रू है तो वो लूप के अंदर आएगा, यहाँ नहीं जाएगा. ये इंक्रीमेंट पार्ट है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आते हैं. सो वी एंटर द लूप फ्रॉम हेयर. ठीक है, यहाँ i 2 लाइन्स है तो कर्ली ब्रैकेट्स में है. t इज इक्वल टू i प्लस 3. राइट नाउ i की वैल्यू 5 है. 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 जो कि t में चला जाएगा. सो आपके पास फिलहाल t में जो आया वो 8 है. Then we have system.out.println t. So we're printing t. t is 8. So screen पे जो वो print करेगा वो वैल्यू प्रिंट होगी 8. ठीक है, 8 पे प्रिंट मतलब आउटपुट में आपको वही दिखाना है जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा. तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है अभी 8. ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे इंक्रीमेंट पे क्योंकि लूप यहाँ खत्म हो रहा. यहाँ लिखा है i इज इक्वल टू i प्लस 5. i की पिछली वैल्यू 5 थी. 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा. दैट मीन्स i की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 10 हो जाएगी. अब वो फिर कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है. यस है, क्योंकि 10 इक्वल टू 10 होता है तो लेस देन इक्वल टू है. सो इक्वल है इसलिए ट्रू है. अब t में क्या आएगा, i है 10 और 3 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 और फिर उस 13 को वो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है. उसके बाद फिर ऊपर आएगा i इज इक्वल टू i प्लस 5. i पिछली बार 10 हो गया था, अब i 15 हो जाएगा. 15 लेस देन इक्वल टू 10 होगा फॉल्स एंड इट विल स्टॉप. लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए, खत्म हो गया. अब आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा. तो पहली बार उसने स्क्रीन पे प्रिंट किया था 8
एंड सेकेंड टाइम जब सिस्टम डॉट आउट ने एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट किया 13, सो आपका आउटपुट हो जाएगा 8 एंड 13. प्रिंट एलएन है, सो मेक श्योर आप उसको डिफरेंट लाइंस पे लिखेंगे. अगर प्रिंट होता तो सेम लाइन पे आता. So it's 8 and 13 is the output and you get 2 marks for this. Okay, next G part is, with XML you invent your own tags. Explain the statement with the help of example. So as we know, XML is extensible markup language where we create our own tags. Markup language is used to create our own tags. Example, if we need to store data about a student using XML, we have to define tags like admission number, name, class, etc. so that I can create following XML file. In that XML file, what will I have? I'll have a tag say student. Inside that I'll have a tag admission number, and then I close the admission number. Then I have name is say Adit. Then I close name. Then I have class. So I write the class and we close class. Make sure that you write the same cases because XML is case sensitive. अगर आपने start किया है capital S के साथ तो close भी capital S के साथ ही करना है. So I can make such thing only if I can define these new tags क्योंकि HTML में student, admission number, name, class ये सब tags नहीं होते हैं. So अगर मुझे चाहिए ये सारे tags हों and मैं उन्हें use कर सकूँ, so for that मुझे एक file बनानी पड़ती है which is called DTD, document type definition, which defines that which all tags would be there and then we can use them in the XML file. So we have to define tags like this, etc. in a DTD file, that is document type definition file, so that I can create following XML file. So that shows that XML is a language where we have to make our own tags. So that's your question number 2 all parts. And then for Java we have question number 4. So this is 3 for your SQL. Then we have question number 4. Okay, now it says the following code has some errors. Rewrite the following code underlining all the corrections made. So as I've told you कि पहले आप ये wrong code लिखेंगे, underline करेंगे errors कहाँ पे हैं, फिर आप उसे correct करेंगे. But यहाँ पे मैं आपको directly corrections बता रही हूँ. So यहाँ पर आपके पास जो errors होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कि कहीं पे कॉमा मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है, कहीं पे कोई लेटर कैपिटल होना चाहिए था, डबल कोट्स होने चाहिए थे. सो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 एरर्स तो जरूर होंगे उसके अंदर. सो इफ वी स्टार्ट फाइंडिंग, पहली लाइन देखते हैं इंट ऑल स्मॉल है, ठीक है. इंट कीवर्ड है, पूरा स्मॉल होना चाहिए था, ठीक है. देन 2 वेरिएबल्स हैं, बीच में कॉमा है, फाइन. एंड में सेमीकोलन है, ठीक है. वेरिएबल नेम्स को आप चेक कर सकते हो कि इनवैलिड नेम्स नहीं होने चाहिए, मतलब स्पेसेस एंड अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए. देन रिटन इज इक्वल टू इंटीजर, आई कैपिटल है, फाइन. डॉट पार्स इंट इज ओके. जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट ब्रैकेट सेमीकोलन, एवरीथिंग इज देयर. सो ये लाइन भी ठीक है. देन ये लाइन भी ठीक है. अब हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ लिखा है इफ रिटन लेस देन 80, फाइन. Or we can't write or like this in Java. That's first error. We have to put double pipe sign. So ये आपका पहला error हो गया. Then system.out.println, S capital है, ठीक है. Not selected double quotes में होना चाहिए था, double quotes यहाँ नहीं है. That's your second error. So यहाँ आते हैं आप, else का e small होता है, that's third error. else के पीछे semicolon नहीं होता, that's fourth error. ये लाइन भी ठीक है. So अगर मुझे इस चीज को लिखना है, आप इसको पहले लिखकर जो एरर्स हैं उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद आप उसे करेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट लाइन ठीक थी, सेकेंड लाइन ठीक थी, थर्ड लाइन ठीक थी. यहाँ पर मुझे चेंज करना है.
So it is if written is equal to 80 or interview is less than 15. ब्रैकेट्स ऐसे होनी चाहिए थी एंड देन यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड जो है वो डबल कोट्स में होना चाहिए, एल्स का ई स्मॉल होना चाहिए और सेमीकोलन नहीं आएगा पीछे. And that's it. So this is your A part. Then is B part of question number 4. How many times will the following loop execute? आपको आउटपुट नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि लूप कितनी बार चलेगा. जब भी कभी आपको ये चेक करना होता है लूप कितनी बार रन कर रहा है, in case it's an entry control loop, that means for or while, you just have to see how many times the condition is true. जितनी बार condition true है loop उतनी बार चलता है. But if you have a do while loop like in this case, so अगर do while loop है तो जितनी बार condition true है +1 एक एक्स्ट्रा चलता है because first time कोई condition check नहीं होती है. So यहाँ पर Z7 है, okay, do अंदर आया, एक बार तो execute हो गया, सम में z ऐड हो गया, z में आया z+2, 7 ऑलरेडी था, 7+2 becomes 9, वो प्रिंट भी हो गया 9. उसके बाद वो यहाँ पर आके चेक कर रहा है 9 less than equal to 12. So if I have to count how many times the loop working for that would be, पहली कंडीशन जो चेक हुई है वो है 9 less than equal to 12, ट्रू. ऊपर गया, फिर सब में ऐड किया, फिर z इंक्रीज होके 11 हो गया, 11 प्रिंट हो गया. उसने चेक किया 11 लेस देन इक्वल टू 12, सॉरी, ट्रू. फिर से ऊपर गया, अब यहाँ पे सब में ऐड हो गया, 13 हो गया, 13 लेस देन इक्वल टू 12 वो चेक करेगा तो वो फॉल्स है. तो आपकी कंडीशन कितनी बार ट्रू हुई? 2 टाइम्स, 1 and 2. बट डू बाय लूप है तो वो एक बार तो पहले भी चला था. दैट्स व्हाई वी से दैट द कंडीशन works for 2 and 1 extra, so total 3 times. So इसका आंसर जो है आपके पास वो होगा loop executes for 3 times. First time without checking any condition and 2 बार और because condition was true. So that's how we answer for this. Then comes C. Rewrite the following program code using if else if instead of switch statement. So ये switch से लिखा हुआ है, इसको if से लिखना है. जो प्रीवियस पेपर हमने किया था उसमें if से था और switch से लिखा था. ओके फाइन. सो आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि जो चीज़ if से ऊपर लिखी हुई है उसमें आप कोई चेंज नहीं करते हो, उसको आपको as it is लिखना है. सो I'll write string rem as it is. देन उसके बाद जो लाइन है int code वाली वो भी हम ऐसे लिखेंगे int code integer dot parse int j text field 1 dot get text. अब ये जो switch वाला कोड है वो आपको नहीं चाहिए, उसकी जगह पर हमें if लगाना है. तो सिंपल switch हटा दो, switch हटा दिया. switch हटाने के बाद जहां पर case 1 लिखा है, जहां पर case 1 लिखा है वहां पर आप क्या करोगे? वहां पे आप लिखोगे if. वेरिएबल कौन सा था switch के साथ? कोड. और इक्वालिटी के लिए 2 बार इक्वल टू लिखना होता है. So हम लिखेंगे if code is equal to 1, same statement, rem is equal to class start on 8th April. ब्रेक नहीं चाहिए होता if में तो हम ब्रेक हटा देंगे. उसके बाद केस 2 की जगह पर आ जाएगा if code is equal to 2, then starts from 10th April, ब्रेक हटा देंगे. आप चाहो तो यहाँ पर else if लगा सकते हैं. if code is equal to 1 तो ये होगा else if, कोड अगर 2 है तो ये होगा else if, कोड अगर 3 है तो ये होगा else ये होगा. So that's it. It's easy to convert. So जहाँ पे भी cases हैं वहाँ पे if आ जाएगा और वेरिएबल वो हम यूज करेंगे जो स्विच के साथ लिखा हुआ है. So if code is equal to 1, write the statement as it is. आप अपने आप से यहाँ पर system dot out या कुछ और changes नहीं करोगे. Whatever is written here, you have to write exactly the same line over here. So else if code is equal to 2, else if code is equal to 3, and then else. That's it. So here goes your if to switch. Sorry, switch to if. Switch is given and we have done the code with if. Okay, next question. Write the values of sum and t after the execution of the following code.
सेम ऐसा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 2 में भी था, which was dependent on this pre-increment and all. Now we have this in D. इसमें क्या है, सम है 27, T है 3. इसमें प्री इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज पहले होगा, T3 था, प्लस प्लस T से 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा सम प्लस 2 into 4. So 2 into 4 मल्टीप्लीकेशन पहले होगी, 2 into 4 will be 8, 8 plus 27 will be 35. So answer of D is 35, and if you want to solve it, you can write it like this. 27 is the value of sum plus 2 into 4. कुछ लोग क्या करते हैं, 27 plus 2 पहले कर देते हैं, that is 29 into 4 कर देते हैं, just because of some carelessness. आपके ये 2 मार्क्स चले जाएंगे अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो. So it should be 27 plus 8. 27 plus 8 is 35. That's the answer. So answer is 35 in sum. So we can write here the final answer as sum is 35, and it's asked for T also, and T is 4. So that's the answer for D. Okay. Then is E, where we have strings. We have strings, and string S is best, string R is luck, Z is R dot concat X. So R is luck, and luck के पीछे join होगा best. So it will become luck best without any space. फिर उसको text field 1 में show कर दिया Z को, ठीक है. text field 2 में show किया है R dot 2 uppercase. Fine. So पहले आपको लिखनी है value of J text field 1, which is going to be the concatenated value, which is luck best, and then you have to write value of J text field 2, which is uppercase luck. So that should be luck. Okay, so that's it, easy. And then is your this 5-mark question, where it's given Seema is a junior programmer at A1 shoe factory. She has created the following GUI in NetBeans. आपके पास यहाँ पे 3 check boxes हैं, यहाँ पे वो quantity enter करेंगे. If the shoe check box is selected, I have to multiply the quantity with 1500 and show the amount here. If sandal is selected, 1000, and if slipper is selected, 500. And ये तीनों check box है, तो हो सकता है तीनों के तीनों selected हो, एक selected हो, दो selected हो, या कुछ भी selected ना हो. That's why they have given a buyer can buy more than one item at a time. The item bought will be selected by the user, and the quantity bought will be entered by the user. Amount to be paid for the item will be displayed in front of the item, that is over here. Okay. Then, for example, if shoe is selected and quantity entered is 20, then amount should be displayed as 30,000. Help Seema write the code for the following. When calculate button is clicked, the amount should be displayed in front of each item, and the name in the appropriate text field, and total amount should be shown in the final total amount. Clear button is clicked, then text fields and checkboxes should be cleared, and when stop button is clicked, the application should close. So as we know that code for clear and stop is almost same in every question, but now we need to code for calculate. Or like I've told you in the previous video as well, कि जब आपके पास ये GUI वाला question होता है, draw the screen on your answer sheet and give arrows and write the names of all the controls which you want to give them, कि इसका नाम क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, and all. So let's start with the thing. So this is if over here, if I have to code for calculate button, code for calculate. Code for calculate, what I have to do in this one is I have to first read the quantities, but only for the ones where the checkbox is selected. So I need a variable for the quantity of first product, quantity of second product, quantity of third product. I need to calculate amount of the first one, amount of the second one, amount of the third one, and then I have to find the total. And what I do is I initially assume that amounts for all three are 0. So if they're not selected, it will be 0, और अगर selected हुआ तो मैं उनका amount change कर दूंगी. So मुझे यहाँ पे check करना है, क्या check करना है? If checkbox shoe, if check shoe dot is selected. So अगर shoe वाला checkbox selected है,
अगर शू वाला चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसकी क्वांटिटी रीड करनी चाहिए। क्वांटिटी रीड करनी चाहिए, फाइन। सो मैं लिखूंगी इंटीजर डॉट पार्स इंट and I have to read txt q1 डॉट गेट टेक्स्ट। सो मैंने उसकी क्वांटिटी रीड की एंड मुझे उसका अमाउंट निकालना चाहिए और उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी, जो उसकी हमने क्वांटिटी रीड की है। अगर ये चेक बॉक्स सिलेक्टेड नहीं हुआ तो क्वांटिटी रीड भी नहीं होगी और अमाउंट कैलकुलेट भी नहीं होगा, मतलब उसके अमाउंट में जीरो रह जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांटेड कि अगर वो चेक बॉक्स सिलेक्टेड नहीं है तो उसका अमाउंट जीरो रह जाना चाहिए, बट अगर सिलेक्टेड है तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। सिमिलरली आपको चेक करना है फॉर द सेकंड चेक बॉक्स। सेकंड वाज फॉर सैंडल, सो वी हैव sandal. So if check.sandal dot is selected, so q2, and then we give 1000 here and a2. So a2 is equal to 1000 into q2. Then we have to give for the third one. q3, and the price for one sandal is 500. So यहाँ पर हम उसको a3 में ले लेंगे। ये आ गया आपके पास तीनों अमाउंट। so, जहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा उसका अमाउंट कैलकुलेट होगा, जहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होगा वहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो टोटल आपको जब निकालना है सो दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 और फिर हमें उसको शो कराना है। सो txt अमाउंट 1 डॉट सेट टेक्स्ट में a1 शो करा देंगे विद द कोड सो दैट इट्स कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग type, and I have to show these. So I have to show a2, I have to show a3, and I have to show the total. So total has to be displayed here, amount 3, amount 2. That's it. So this thing is done. That's it. That's the coding for getting the total amount. And then you have to answer the second part, which was to clear. And for clear, what I have to do is I have to make all these text fields blank. So for making the text fields blank, we write this line. So this has to be given for all 7 text fields. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And for the check boxes, you have to put set selected. So we have set selected, and in brackets I have to give false. So false means that the tick mark should be removed from the checkbox, and to close you have the command system.exit. That's same. So I have to remove this shoe, sandal, and slipper. Same way for the text fields. It should be total, amount 3, amount 2, amount 1, q3, q2. So this is the code for the complete thing. So 1 mark for exit, 1 mark for this clear, and 3 marks for writing the logic for the calculations. So इस तरह से हम solve करते हैं आपका Java का part. That's question number 2 and question number 4. I hope you understood whatever I've told you in this. In case कोई doubts है, कुछ नहीं समझ आया है या इससे matching कोई और question है जो इस paper में नहीं है but आपको समझ नहीं आया कैसे करना है, so do write that in the comment section and I'll try to get back to you with the solution as soon as possible. And yes, if you really find the video useful for your exams, don't forget to share it so that your other classmates and other 12th mates who are anywhere can also take benefit out of this. Thank you. Keep watching. Keep learning.